Hello students, welcome to Rajesh your math lab. आज हम देखिबा स्ट्रेट लाइन क्लास 11 आमे नेबा CHSE एलिमेंट बाय एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स रा एक्सरसाइज 11 ए रा अप टू 5 नंबर पर्यंत प्रीवियस वीडियो रे पढछि एबे आमे जेबा 6 नंबर. If the area of the triangle with vertices 0 0 1 0 and 0 a is 10 units, find the value of a. Let's have the solution. कौन करबार अछि हमको a रा वैल्यू बाहर करबार अछि. गोटे ट्रायंगल देछि एटा को x एक्सिस नै एटा y एक्सिस नै जार कोऑर्डिनेट से कोड बदल छै वर्टेक्स से a 0 0 मींस ओरिजिन रे बदल अछि आ गोटे सपोज जति कि 1 यूनिट जति हो केते हो एटा को b नै 1,0 एंड आउट अछि केते 0,1 y एक्सिस पर अछि c दिस इज 0,1 राइट. अच्छा purely it looks like a right angle triangle. Okay, अच्छा ताले मते को पिला माने मु नै गली कैपिटल A 0 0 राइट A काहे देबा ओ तो अछि हमर ऑलरेडी ना A नेबा हमें O नै जबा O 0 0 O 0 0 A B 1 0 एटा को O 0 0 लिखली O 0 0 B 1 0 B 1,0 and C 0,8 are given vertices. अच्छा now according to question area of triangle OBC equals to केते देछि पिला माने equals to 10 units implies अच्छा this is a right angle triangle. Right angle triangle रे कोन होबले area of triangle equals to half into base into height. Okay, half into base into height equals to केते देछि that 10 implies half into base मान करले केते एबिटी केते डिस्टेंस जाइछि 1 height केते डिस्टेंस जाइछि 8 equals to 10 ताहले implies a by 2 equals to 10 ताहले a equals to केता होतले 20 right. So answer आछि 20 आछि देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that points are collinear. अच्छा जति तीनटा पॉइंट कोलिनियर हेबे हमें ए तीनटा पॉइंट को नेकी गोटे ट्रायंगल फॉर्मेशन कर परिबा कि केबे हेते कर परिबा कि ताले जति ट्रायंगल फॉर्मेशन कर परिबा ताले ताले एरिया इक्वल टू केता 0 तो ए कॉन्सेप्ट हम यूज करबा जति तीनटा पॉइंट गोटे लाइन रे रहबे तेबे समान को नेकी हम जति एरिया फॉर्मेशन करबा गोटे ट्रायंगल फॉर्मेशन करबा ताले एरिया इक्वल टू 0. अच्छा लेट्स हैव द सॉल्यूशन. if 3.1427 and 3a are collinear then ताको नेगेटिव एरिया फॉर्मेशन का फॉर्मूला कर देना हाफ इनटू x1 into y2 minus y3 7 minus 8 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equals to 0. ओके ना कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ट्रायंगल रो वर्टिसेस जको कोलिनियर अछि तार एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू केता 0 हाफ इनटू x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ताले ए हाफ का को मल्टीप्लाई करे 8 टू डिवाइड करके 4 को करे कोन हो मल्टीप्लाई जो 0 जो ये कितना आसला 7 minus 8 plus 2a minus 8 plus 12 3 into हम एंटी कर दबा 3 into minus 3 चार साथ में minus 3 into 3 कितना आसला minus 9 equals to 0. ताले 12 ए गले a 7 minus 17 minus 10 equals to 0. ताले a equals to कितना 10 देखिए आंसर आछि यस आंसर ओके. Your next question कौन देछि find the slope of the lines which angle of inclination से given.
if theta is the angle of inclination, then slope equals to केते होबो बोले tan theta, right? जहां थीटा देखे तार tangent angle इक्वल कोन ट्रिग्नोमेट्रिक tangent angle इक्वल्स टू कोन स्लोप होबो। ताले देखिबा व्हाट इज द आंसर। नंबर 1 स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 ର वैल्यू होची केते √3। अच्छा आस्ते की अच्छा tan 30 ର वैल्यू 1/√3 हो। tan 30 इक्वल्स टू m इक्वल कर देबा sin 30 by cos 30। sin 30 ର वैल्यू होची केते 1/2 by cos 30 ର वैल्यू √3/2 टू कटिला और आसला केते 1/√3। अच्छा तापर हम देखिबा कारण ना 2 नंबर क्वेश्चन स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan 45 डिग्री इक्वल्स टू आंसर केता 1। तो सब लाइए एबिति पामे 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर कोन देछि 1 नंबर आंसर मिल गला 2 नंबर आंसर मिल गला 3 नंबर कोन देछि ना स्लोप इक्वल्स टू m equals to tan 60 degree tan 60 ର वैल्यू होची √3। आर सॉल्यूशन कोन होबो स्लोप इक्वल्स टू m equals to tan 135 degree 135 degree को क्वाड्रेंट अछि सेकंड क्वाड्रेंट अछि सेकंड क्वाड्रेंट sin क्वेश्चन में कोसेक करा तो tan नंबर कोन नेगेटिव होची tan इक्वल्स टू केते आसा -1। देखो थर्ड क्वेश्चन में इसका फोर्थ क्वेश्चन में इसका आंसर Finally, the next one. Find the inclination of the lines whose slopes are given. एटे कौन देती tan theta दे देती हमको theta बाहर करना है। Okay, let's have the solution. हमें एक नंबर पाएगा। So given that कौन देती होते tan theta equals to 1/2 ताले theta equals to कौन जहाँ पे हम 0 to 180 में चल रहे हो आउ theta वैल्यू 1/√3 को डैश 30 डिग्री डैश को so angle of inclination equals to first 30 degree। ओके नेक्स्ट हम देखिबा नंबर 2 रो कोन देछि tan थीटा इक्वल्स टू केते दे देछि 1 ताले थीटा इक्वल्स टू केते हैला 5/4 और हम करबा थीटा इक्वल्स टू 45। ओके नेक्स्ट वन देछि देखि दियो 3 नंबर रो tan थीटा इक्वल्स टू √3 ताले थीटा इक्वल्स टू केतना होगा 60 ओके कोन देछि 4 नंबर रो tan थीटा इक्वल्स टू केते देछि -1 ताले थीटा इक्वल्स टू 135 एनी माइनस ता कोड আছে सेकंड क्वाड्रेंट साइन को से कर पकड़ के नेगेटिव लिखना ओके देखि दियो चेक करते हैं फर्स्ट आंसर 30 डिग्री आछे सेकंड 45 डिग्री थर्ड 60 डिग्री तापर 1 आछी। Next question. Find the angle between pairs of lines whose slopes are given. Tan theta equals to m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2. The whole angle between two lines of formula angle between two lines. जदि slope given अछि angle between two lines of formula अछि okay तो let's have the solution on दे देछि एक नंबर करबा m1 equals to 1/√3 m2 equals to केते दे देछि 1 दे देछि ताले देखो एंगल बिटवीन देम इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू कोन हो m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 1/√3 into 1 रो होल इक्वल्स टू √3 minus 1 by √3 plus 1 एटे किसे आलो 1 अछि एसे बात तो √3 minus 1 by √3 plus 1 अच्छा तळे √3 plus 1 रहेला ताको कोने काम कर दो √3 minus 1 by √3 minus 1 कर दे ताले एटा केते गला √3 minus 1 रो होल स्क्वायर by एटा a plus b √3 plus 1 into √3 minus 1 गला ओके अच्छा प्ले ताले इक्वल्स टू कोन आसो देखो a minus b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab डिवाइड बाय एटा कोन होला a plus b into a minus b इक्वल्स टू केते गला a स्क्वायर minus b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 plus 1 minus 2 √3 by 3 minus 1 4 minus 2 √3 by 2 equals to 2 minus
এটা 2√3 হবো। তো দেখতে বলে 4 minus 2√3 by 2, 4 by 2 केते ହେଲା 2 minus 2√3 by 2 केते ହେଲା 3। ओके, सो ये कौन आसता पहले देख लो कि tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस थीटा के 3 थीटा। ओके, tan थीटा इक्वल्स टू जहां से मॉडुलस थीटा थीटा। अच्छा एबे मते को tan इक्वल आसीला tan थीटा इक्वल आसीला नो tan थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 minus √3। ओके, अच्छा आमे समझते जानि छे mod x केता भूल अछि तीरा भूल अछि बोल अछि x जोटे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x जति x कोन हो लेस देन 0 ताले ठीक tan थीटा इक्वल्स टू जति mod x ने उछि बोल तेटा कोन हो प्लस और माइनस 2 minus √3 वगैरह ने से आपको को पचार छी एंगल बोल पचार छी तामाने से आपको पचार छी थीटा इक्वल्स टू केता हो tan इक्वल्स प्लस और माइनस 2 minus। ओके, सो देखि दियो पिले एति होचे आंसर दे छी। हां ये छी ठीक है। जिबा में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछ कि m1 equals to √3 m2 equals to -1। therefore let angle between them equals to theta and tan theta equals to कितना हो m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 m1 into m2। okay, tan theta equals to -1 minus √3 by 1 minus √3। okay, rough whole equals to -1 माने √3 plus 1 by -1 माने √3 minus 1 रो फॉर्मूला ताले कोन छिला देखो tan theta equals to √3 plus 1 by √3 minus 1 रो फॉर्मूला ताले tan theta equals to √3 plus 1 by √3 minus 1 into √3 plus 1 by √3 plus 1 कहीं तोली रेशनल लिखलो तो एटा कोन भेला √3 plus 1 रो कोन भेला होल स्क्वायर by √3 रो स्क्वायर minus 1 रो स्क्वायर रो होल मोड तो इक्वल्स टू implies tan theta equals to a plus b रो होल स्क्वायर √3 रो स्क्वायर plus 1 रो स्क्वायर plus 2 √3 by √3 रो स्क्वायर 3 minus 1 रो मोड ताले tan theta equals to এটা স্কয়ার রুট করে দিলা 3 plus 1 কেতে না 4 plus 2 √3 by 2 রম implies tan theta equals to 2 plus √3 रम implies tan theta equals to mod टा उठले कोन हो प्लस और माइनस 2 plus √3 हबो ताले थीटा इक्वल्स टू कितना आसीला थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स प्लस और माइनस 2 plus √3 आस्ति के आंसर देख दियो पिला माने आंसर मिल जाई छी। हां अच्छा मिल जाई छी चेक कर दियो सब पिला माने आज आमी अप टू 6 नंबर टू 10 पर्यंत कर देले। ओके, एक्सरसाइज रो आगु 5 नंबर को करथला एबे 6 टू 10 पर्यंत लेबे। सो आज भाई एति थाओ बंदा देखा हो तो नो वीडियो रे नो कांसेप्ट सहित दमदार एग्जांपल सहित आपण देखिबा विथ फार्मूला से को बाय बाय टेक केयर एंड हैव ए